Thank you so much, Anand. A very good evening to distinguished speaker and all participants. I, Parastuk, member of Legal Vidhiya, welcome you all to our highly anticipated webinar on a topic navigating the PoSH Act. The webinar on the Sexual Harassment of Women at Workplace Act 2013 aims to foster a comprehensive understanding of the legislative framework designed to combat workplace harassment. This crucial session delves into the key provisions of the Act, emphasizing prevention, strategies, protective measures, and the legal prohibition of such behavior. Before we begin the webinar, I would like to introduce Legal Vidya to you all. Legal Vidya is a platform that was founded in the year 2021 with the vision of empowering young lawyers. We conduct internship program, webinars, seminars, competitions, and many. Over the last 2 months, Legal Vidya has had more than 500 plus interns, making a total of 1,000 plus interns in the last 8 months. Legal Vidya also offers various opportunities such as internship programs, a platform to publish articles, and host interactive webinars and sessions for the law students. Before I introduce our speaker, I like to share about our course on PoSH. This certificate course takes you on a 4 week journey to dive deep into preventing sexual harassment at workplace. Live webinars, recorded lectures, written notes, MCQ assessments, and guest lectures. You will get it all in these 4 weeks. For more information, the link in our the chat box. We will drop the link soon. Now it is with great honor that I introduce our distinguished speaker for today's webinar, Miss Sakshi Sharma. She is the founder of Legal Vidya. She is dynamic legal professional who has dedicated herself to the empowerment of aspiring lawyers and legal enthusiasts. With a profound passion for legal education, Sakshi ma'am has tirelessly worked to bridge the gap between academics and practical legal skills. Her commitment to nurturing the next generation of legal minds is evident through Legal Vidya's innovative webinars, workshops, and educational initiatives, which aim to provide invaluable insights to the legal profession. Sakshi Sharma ma'am visionary leadership has made Legal Vidya a cornerstone in the journey of countless individuals seeking to excel in the field of law. So without further ado, let us warmly welcome ma'am to the virtual stage. We eagerly await the invaluable wisdom and perspective they are about to share with us. Over to you, ma'am. Thank you so much, Paris. So good evening, everyone. How are you all? If I'm audible, please someone let me know. Okay, great. I believe the chat box is on, so you can just write there. How are you all doing today? Before we move any further, I'd like to know. Okay, great. Good. So, during this session that is on navigating the PoSH Act, we'll be seeing a few key aspects. Firstly, we'll try to understand what sexual harassment at workplace means by a few examples. We'll understand what sexual harassment is. Then we'll look at a few key aspects of the Act, including the key definitions, such as that of sexual harassment, employer, employee, and so on. And then we'll also look at a few aspects of what is an employer's duty, that is a person who's hiring an employee, what is his duty when it comes to preventing sexual harassment at workplace. Further, we'll also look at some other aspects of the act, that is regarding the complaint committee, because जब हम ये act देखते हैं, it talks about prevention, prohibition and redressal, that is किसी चीज को रोकना, and then if that things happen, then how we can provide remedy. So the complaint committee is one such way to provide remedy. So without any further ado, I'll just start sharing my screen. Please, Paris, let me know if my screen is visible. Is my screen visible? Yes, ma'am. Thank you so much. So let's begin the session.
Now, PoSH Act. पहले तो एक्ट का पूरा नाम क्या है? Prevention, Prohibition and Redressal. That is Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act. So, as I stated earlier कि हम लोग कुछ examples और कुछ situations के द्वारा sexual harassment को समझने की कोशिश करेंगे. Now, one such example is this. Now, I believe the screen is visible to you all, so please read it, and I'll also read it aloud for you all. Kamini is a bright young team leader working in a call center. Known to be forthright, she is dedicated, hardworking, and is a perfectionist. मतलब कामिनी अपने काम में अच्छी है. Now one day what happens is Ravi asks her to stay late because they had some work to complete for an important presentation. Then Ravi offers to buy Kamini dinner and later drops her at her home since it's been a long day. Now after dinner, Ravi ने क्या किया कि Ravi proposes to Kamini that he would like her to spend the night with him. Kamini refuses politely but firmly and goes home. Next evening, again Ravi repeats this request, and on Kamini's refusal, threatens her that if she doesn't give in, he will tell everyone that she has made a pass at him. Now tell me, guys, do you think this is sexual harassment? Does this constitute as sexual harassment or not? You can just write your answers in the chat box. Yes. Does anyone has a reason why this constitutes to sexual harassment? I see two yes, Rakhi and Sumit. Do you have any reason to support your answer? Quid pro quo. Yes, right. Quid pro quo. This is one type of sexual harassment that happens at workplace. Now, other one is also an example of quid pro quo. That is, Renuka is employed as a domestic worker where she is expected to take care of all the household activities other than cooking. Now, generally क्या होता है कि जो lady of the house she leaves early. Now, Renuka is therefore left alone in the home with the male members of the house. Renuka finds the male member constantly rearing at her when he is at home, and often he walks around the house just wrapped in nothing other than a towel. Now, इससे क्या होता है कि Renuka is feeling uncomfortable. On one occasion, while she was sweeping, he pinched her bottom. When she protested that, when she protested and said that she'll complain to the lady of the house, he threatened to accuse her of stealing and that he will ensure that she loses her job. Now, is this sexual harassment? Yes, you're right. Even indecent gestures, such as what has happened with Renika in this particular example, also constitute sexual harassment. You're all pretty right when it comes. Now, both these examples relate to quid pro quo. Uh, Now, what happens that in this above example, the male member he's threatening Renuka to keep quiet about an unwelcome physical contact that he has made with his house help or the domestic worker if she wants to continue her employment. Now he commits quid pro quo form of sexual harassment, and his behavior occurring in a matrix of power is unwelcomed, sexual, and has negative impact on Renuka. Now, what happens when someone is sexually harassed is that that particular person is not just tortured physically but also emotionally. It is a really traumatic experience, and now to ensure that no such woman feels such traumatic experience at workplace and she feels that she's safe at workplace, the government had launched this particular act, that is the PoSH Act. तो चलो देखते हैं sexual harassment क्या होता है. Sexual harassment refers to unwelcome sexual advances, as you all are aware, कि anything that is not consensual, that we are not expecting, such sexual advances, comments of sexual nature, request of sexual favor, and harassment or comments about an individual's gender, all of which create a hostile work environment, is something that this act tries to prohibit. Now, making sexual remarks or jokes, implied or actual threats of being overlooked for work opportunities or promotion, if you say no to your boss's advances, that is, कि अगर आपके बॉस ने आपको जो करने बोला आप वो नहीं करोगे तो आपको बड़ा प्रमोशन जो आप चाहते हो वो नहीं मिलेगा या फिर आपको काम से निकाल दिया जाएगा for speaking up. Even these all causes a mental trauma and also constitute sexual harassment. Now, similarly,
unwelcome touching, patting, or pinching by your boss or your coworker or your customer in also constitutes sexual harassment. Then regular hassling for a date, that is किसी को बार बार परेशान करना, even once the woman has said no, I don't want to be in a relationship with you, in a romantic kind of relationship with you, we are just co-workers. या फिर किसी को stalk करना, being followed to home. Then sexually offensive images दिखाना, या फिर कि कोई भी ऐसा सेक्सुअल काम करना जिससे एक हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, या फिर जिससे women को अनसेफ लगता है in their particular work environment. These all constitute sexual harassment. Now इंडिया में दो केसेस थे that led the way to this act, that is the PoSH Act जिसकी हम आज बात कर रहे हैं. दोनों केसेस काफी जाने पहचाने हैं. आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी अवेयर. द फर्स्ट इज द विशाखा केस एंड सेकंड इज द डॉक्टर मेधा गोपाल लेले केस. ना विशाखा केस में क्या हुआ था कि एक सोशल वर्कर थी, एक साथी थी, भवरी देवी. नाउ ये 1985 में साथिन बनी थी एंड शी वाज एम्प्लॉयड एज अ पार्ट ऑफ वुमेन्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट व्हिच वाज रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान. अब क्या हुआ था, in 1992 Bhavri Devi found herself alienated when she took up the issue of child marriage, जो कि इंडिया में काफी prevalent था even during that time. In 1992 itself, she was gang raped by men, angered by her efforts to prevent child marriage in their family. Her subsequent treatment to the police and court's acquittal of the accused attracted widespread national and international media attention. क्या हुआ कि जब किसी के साथ गैंग रेप होता है, भवरी देवी अपना काम कर रही थी बीइंग अ साथी, शी वाज डूइंग हर वर्क एंड शी वाज sexually assaulted because of something good that she did. It caused anger in the nation and काफी सारे female social workers ने एक petition file कर दी in the Supreme Court under the name of विशाखा. तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस फॉर्मुलेट की थी दैट पेव द वे फॉर द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट 2013. तो जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था विशाखा केस में, इसमें कोर्ट ने काफी ज्यादा एम्फसाइज किया था ऑन जेंडर इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14, 19 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और ये जो कोर्ट है इसने ये बोला था कि सेक्सुअल हरासमेंट जो है वो वुमेन के ये जो राइट्स हैं अंडर आर्टिकल 14, 19 एंड 21 उसको वायलेट करती है. And in absence of domestic laws, international conventions were referred by the Honorable Supreme Court, and it derived authority from Article 15, 51C and 253. Now, Vishakha guidelines जो है that paved the way for the act हम जानते, but Vishakha guidelines क्या थी? Vishakha guidelines were a set of rules that were given in this particular case. तो इसमें कुछ 9 main guidelines थे. Firstly, it was that employers must prevent incidents of sexual harassment and उन्हें कोई ऐसा mechanism provide करना चाहिए था जिससे जो sexual harassment की complaints उसको resolve किया जा सके. Then sexual harassment क्या होता है ये भी कोर्ट ने बताया था. It includes physical contact, sexual favors or demands, then sexually colored remarks, showing pornography and any unwelcome sexual conduct. इसके अलावा कोर्ट ने ये बोला था कि एम्प्लॉयर्स जो है दे मस्ट नोटिफाई एंड प्रोहिबिट सेक्सुअल हरासमेंट विद रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड मस्ट रिफ्लेक्ट दिस प्रोहिबिशन. Further, working conditions should be non-hostile, fostering a sense of equality for women employees. Since this law, this particular act is women-centric, तो इसका जो basis है, as I've already stated, विशाखा केस से आता है. So, कोर्ट ने ये भी बोला था कि women को equality की sense feel होनी चाहिए at your particular workplace, and it should not be hostile. Employers must initiate prosecution for offences under IPC and provide protection to the victims, in this case the female employees, or disciplinary action should be taken if anyone violates these particular rules. कोर्ट ने तभी ये बोल दिया था, दैट्स 1997 की रूलिंग, और कोर्ट ने तब ये बोला था कि कंप्लेंट कमिटीज होनी चाहिए दैट मस्ट बी लेड बाय वुमेन, जिसमें एटलीस्ट 50% जो मेंबर्स होंगे वो फीमेल मेंबर्स होंगे, और ये क्या करेंगे, काउंसलिंग करेंगे और जो कंप्लेंट्स आती है उनसे डील करेंगे, और ये एक एनुअल रिपोर्ट भी बनाएंगे दैट विल बी सबमिटेड टू द गवर्नमेंट. अपार्ट फ्रॉम दैट, एम्प्लॉयर-एम्प्लॉयी मीटिंग that should allow workers to address sexual harassment issues, and employers must
टेक स्टेप्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट सेक्सुअल हरासमेंट। तो ये कुछ चीजें थी जो विशाखा केस में बोली गई थी। अब इसके साथ और एक केस है जो अपन देख रहे हैं स्क्रीन पे, दैट इज द डॉक्टर मेधा कोतवाल लेले केस। ये केस क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज दिस केस टॉक्ड अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विशाखा गाइडलाइंस। अब क्या हुआ था कि 1997 में रूलिंग तो आ गई थी, बट दे वर नॉट इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड। So Dr. Medha Kotwal Lele, who is a coordinator of Alochna, presented the case of ongoing sexual harassment. और इन्होंने बोला कि विशाखा केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिए हैं, they were not being effectively implemented in our country, that is India. उन्होंने ये बोला कि despite the guidelines, women are continuously being harassed, and with state functionaries also violating them, they're causing harm and injury to their dignity. तो केस में बेसिकली ये क्वेश्चन था whether the individual state government had implemented the necessary changes to adhere to विशाखा guidelines, जिसका आंसर ऑब्वियसली था नहीं। तो इसमें जो थे काफी सारे रेलेवेंट लॉज भी कोर्ट ने एनालाइज किए। फिर कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि court stated, and I'd like to read that out, that court highlighted the poor gender equality record in India, emphasized the importance of implementing Vishaka guidelines to achieve gender parity and ensure women dignity and respect at work. Now, the court criticized states, that is all the states, for not implementing the Vishaka guidelines. 1997 की guidelines थी, लेकिन 2012 तक ये implement नहीं हुई थी. And the court criticized each and every state for that. The court issued specific directions, including the requirement for state governments to amend their rules within 2 months. और amend करके क्या करना था? They need to establish a complaint committee. कौन होगा? जिनका हेड होगा कोई भी एक औरत, that is a woman, and ensure effective implementation of Vishaka guidelines. Further, जो प्रोफेशनल बॉडीज है जिनको हम जानते हैं, that is the BCI, Medical Council, Council for Architecture, then there is the ICAI, then there is Institute for Company Secretaries. ये सारे थे। तो इन सारे जो प्रोफेशनल बॉडीज हैं इनको भी बोला गया था कि ये जो विशाखा गाइडलाइंस है इसका आप कंप्लायंस करो, दैट इज इनको मानो, और एक इफेक्टिव ICC, दैट इज अ कंप्लेंट कमिटी, एस्टैब्लिश करो। कोर्ट asserted that the Vishaka guidelines जो है it should not just be symbolic and provide a recourse for aggrieved women, stating that in case of non-compliance, individuals should approach to the High Court of their respective state. बेसिकली जो ये केस था, दैट इज द मेधा कोतवाल लेले केस, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट था, इनका मेन पर्पस ये था, इनका जजमेंट रिवॉल्व्ड अराउंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द विशाखा गाइडलाइंस, जो कोर्ट ने काफी पहले, दैट इज 1997 में दी थी। So you see, there was a lack of, I'd say, compliance from the side of all states. क्योंकि ये guidelines आप देखो, आप विशाखा guidelines पढ़ोगे और जो PoSH Act है वो पूरा पढ़ोगे, तो then you'll see कि जो बातें विशाखा गाइडलाइंस में बोली गई है उसी को elaborate करके अपन का पूरा एक्ट बना है generally, and there are a few extra provisions, however, but the main provisions are one that are taken from the Vishaka case only. So this act must have been made many years back, but ये act कब बना? जाके 2013 में, when someone, that is Medha Kotwal Lele from Alochna, came ahead and said कि विशाखा गाइडलाइंस का compliance नहीं हो रहा है। अब अपन जो एक्ट की बात करते हैं, तो इस एक्ट का स्टार्टिंग का पार्ट है, इट सेज दैट इट इज एन एक्ट टू प्रोवाइड protection against sexual harassment of women at workplace, that is very clear by its name, and for the prevention and redressal of complaints of sexual harassment. Then यह एक्ट ऑल्सो इट सेज कि सेक्सुअल हरासमेंट जो है वो वुमेन का राइट टू इक्वालिटी को वायलेट करता है अंडर आर्टिकल 14, 15 of the Constitution, and also her right to life, and right to life में especially क्या, to live with dignity, उसको वायलेट करता है अंडर आर्टिकल 21 of the Constitution. Further, right to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business, and to have a safe environment are also violated. क्यों? क्योंकि सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस काफी ज्यादा होता है. सो ये एक्ट इट एम्स टू remove all kinds of sexual harassment and to provide redress for the same. Further, ये भी बोलता है कि protection against sexual harassment and the right to work with dignity are universally recognized human rights
आपके इसमें तो एक इंस्ट्रूमेंट है, कन्वेंशन है, दैट इज द CEDAW. इसका फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, which has been ratified on 25th June 1993 by the Government of India. तो इसके compliance में भी ये एक्ट बना है. अब इस एक्ट के कुछ की फीचर्स है. इन की फीचर्स में आता है पहले तो कंप्लेन मैकेनिज्म. ये एक्ट ऑल्सो जो प्रिवेंटिव मेजर्स है वो प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉयर के ऑब्लिगेशन से बताता है. ये कंप्लेन कमेटी एस्टैब्लिश करता है, क्लियरली डिफाइन करता है कि किन किन जगहों पे ये एक्ट एप्लीकेबल होगा. दैट इज वर्क प्लेस क्या होंगे, एम्प्लॉयर कौन होंगे, एम्प्लॉय कौन होता है, सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें ये एक्ट बताता है. नाउ दिस सेशन, इस सेशन में हम लोग जो है जो की डेफिनेशन उनको देखेंगे. देन वी विल सी अबाउट द कमिटीज. ये इस एक्ट में दो कमिटीज है. द फर्स्ट वन इज इंटरनल कंप्लेंट कमेटी एंड देयर इज अ लोकल कंप्लेंट कमेटी. तो उन दोनों का कॉम्पोजिशन अपन देखेंगे. देन विल सी कंप्लेंट मैकेनिज्म क्या है इस एक्ट के अंदर, एंड विल आल्सो सी द obligations of an employer. So this will be a thorough, I'd say, go through of this act. तो पहला की डेफिनेशन, सिंस द एक्ट रिलेट्स टू सेक्सुअल हरासमेंट, सबसे पहले अपन को ये जानना जरूरी है कि सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है. तो जब अपन सेक्शन 2 सबसेक्शन एन में जाते हैं ऑफ द पर्टिकुलर एक्ट की डेफिनेशन क्लॉज है, इसका सबसेक्शन एन स्टेट्स सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है. तो सेक्सुअल हरासमेंट बेसिकली एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग अनवेलकम एक्ट, दैट इज जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, वेदर इट इज डायरेक्ट और बाय इम्प्लीकेशंस. अगर कोई आपसे फिजिकल कांटेक्ट कर रहा है या आपके पास आने की कोशिश कर रहा है, इफ एनीवन इज डिमांडिंग और मेकिंग अ रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, or someone is making sexually colored remarks or showing pornography or any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of sexual nature. इसमें सबसे की पॉइंट है सेक्सुअल नेचर. तो सेक्सुअल नेचर का कोई भी कॉन्डक्ट इधर वर्बल और नॉन वर्बल, तो और एनी अनवेलकम फिजिकल टच, ये सारे जो ये सेक्सुअल हरासमेंट के क्राइटेरिया में आते हैं अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट. So some things that can be considered sexual harassment is कोई आपसे फेवर्स मांग रहा है, ठीक है, मेकिंग सेक्सुअली सजेस्टिव रिमार्क्स, और कोई ऑफेंसिव जोक्स कर रहा है या फिर ऑफेंसिव कमेंट कर रहा है आपके ऊपर, कोई आपसे आपके पर्सनल लाइफ के बारे में इनअप्रोप्रिएट क्वेश्चंस पूछ रहा है, या फिर कोई सेक्सिस्ट या फिर ऑफेंसिव पिक्चर शोकेस कर रहा है, पोस्टर शोकेस कर रहा है, जानबूझ के आपको ऐसे कोई एसएमएस कर रहा है, ईमेल भेज रहा है, व्हाट्सएप कर रहा है, कोई भी आपका एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय, या फिर कोई थ्रेट कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है आपको because they want some sexual favors from you, or someone is trying to come in physical contact with you, such as someone is trying to touch you inappropriately or touch you even though you know you don't like it, or someone is trying to pinch you, or someone is uh, in basically invading your personal space, that is he's getting too close for no reason. ये सारी जो चीजें हैं ये सब सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में आती है. The second definition is aggrieved woman. तो aggrieved woman जो अपन देखते हैं in relation to a workplace, a woman of any age, whether employed or not, who alleges to have been subjected to an act of sexual harassment. And secondly, in relation to a dwelling place or house, a woman of any age who is employed in such a dwelling place or house. Now you see, अगर कोई औरत वर्क प्लेस की अपन बात करते हैं, ठीक है. Now, if someone is visiting a workplace, if someone is working in a workplace, whether it is a domestic worker, whether it is for remuneration, whether it is employed, whether that person is employed directly or through an agent, or if it is a contract worker, apprentice है, trainee है, या फिर even intern है for that matter of fact, whether it is a regular employee, temporary employer, an ad hoc employer, even a daily wager. ठीक है. तो एम्प्लॉयज जो वर्क करते हैं उसमें काफी सारे क्राइटेरिया आते हैं, जैसा मैंने बोला. इनमें से कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट का अगर विक्टिम होता है, दे आल्सो फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ एग्रीड वुमेन अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट. देन एम्प्लॉयर. अब एम्प्लॉयर कौन होता है? एज यू कैन सी दिस डेफिनेशन इज प्रीटी बिग.
Now, first we'll go through this definition and then I'll explain to you in short. So, employer in relation to any department, organization, undertaking, establishment, enterprise, institution, office, branch or unit of the appropriate government or any local authority, तो उस department का head, ठीक है? Or any other such officer as the appropriate government or the local authority, as the case may be, specify in may by an order specify in this behalf. ठीक है, तो ये होगा employer. दूसरा आता है in any workplace not covered under sub clause 1, that is जो ऊपर वाला sub clause था, any person responsible for the management, supervision and control of the workplace. तीसरा है in relation to workplace covered under sub clause 1 and 2, the person discharging contractual obligations with respect to his or her employees. And चौथा है in relation to a dwelling place or a house, a person or a household who employs or benefits from the employment of domestic worker, irrespective of the number, time period, or type of such worker employed, or the nature of the employment or activities performed by domestic worker. सो ये सब जो है एम्प्लॉयर कहलाते हैं अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट. तो बेसिकली अपन समझे, सो व्हेन अ वर्क प्लेस इज अ लोकल बॉडी और अ गवर्नमेंट बॉडी, ठीक है, तो उसका हेड जो तब उस जगह को लीड कर रहा होगा या फिर कोई भी दूसरा ऑफिसर जिसको स्पेसिफाई किया गया होगा, ठीक है, एनी ऑफिसर दैट हैज बीन स्पेसिफाइड बाय एन ऑर्डर, वो होगा एम्प्लॉयर. दूसरा जो सब क्लॉज है वो बात करता है प्राइवेट वर्क प्लेस की. तो जब हम प्राइवेट वर्क प्लेस देखते हैं तो कोई भी पर्सन जो सुपरविजन का इंचार्ज हो, कंट्रोल का इंचार्ज हो या फिर जो ओवरऑल मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ही विल बी द एम्प्लॉयर. और जब अपन ड्वेलिंग हाउस की बात करते हैं तो ड्वेलिंग हाउस में अ पर्सन हु एम्प्लॉयज, दैट इज अ पर्सन जो एक डोमेस्टिक हेल्प को अपने घर में रखता है वो, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो उसके एम्प्लॉयमेंट से बेनिफिट करता है, दैट इज घर के रहने वाले सदस्य जिनको बेनिफिट हो रहा है अब बिकॉज ऑफ दैट हाउस हेल्प, ये सारे जो लोग होते हैं ये ड्वेलिंग हाउस में एम्प्लॉयर कहलाते हैं. देन वर्क प्लेस. अब ये जो वर्क प्लेस वाला डेफिनेशन है, it gives the scope of this act कि एक्ट कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है. So it is pretty simple. Any department, organization, undertaking, establishment, enterprise, institution, office, branch or unit which is established, owned or controlled or wholly or substantially financed by funds provided directly or indirectly by appropriate government or local authority or a government company or a corporation or a cooperative society, any private sector organization or a private venture, undertaking, enterprise, institution, and so on. Then there's hospital and nursing homes. Then any sports institute, stadium, sports complex, or competition or game venue, whether residential or not, that is used for training, sports, or other activities relating thereto. Then any place visited by the employee arising out of or during the course of employment, including transportation by the employer for undertaking such journey and a dwelling house or a place. तो देखो, कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कोई एनजीओ, किसी का घर, नर्सिंग होम, कॉर्पोरेशंस, कंपनीज, फार्म्स, इनफैक्ट इवन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, तो ये सारी जो जगहें होती है ये वर्क प्लेस के क्राइटेरिया में आती हैं अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन. Now let's talk about the most important point, that is when it comes to redressal. ठीक है, तो redress कैसे दिया जाता है to an aggrieved woman? A redress is given with the help of complaint committees. कंप्लेन कमिटीज क्या होती है? कमिटीज होती है जो बेसिकली एग्रीव्ड वुमेन की कंप्लेंट्स देखती है. ये कंप्लायंस अभी देखती है व्हेन इट कम्स टू पॉश एक्ट. ठीक है, सो इस एक्ट में दो तरह के कंप्लेन मैकेनिज्म्स हैं. First is an ICC, that is an internal complaint committee. Then there's an LCC, that is a local complaint committee. All complaint committees have at least 50% women representation. As was also said कि विशाखा गाइडलाइंस में कि आप कंप्लेंट कमेटी एस्टैब्लिश करोगे जिसमें एट लीस्ट 50% वुमेन रिप्रेजेंटेशन होगा. ठीक है, तो पॉश एक्ट वो एस्टैब्लिश करता है ऑल कंप्लेंट कमिटीज विद 50% वुमेन रिप्रेजेंटेशन. एंड आईसीसी, और एक पॉइंट है कि जो आईसीसी या फिर एलसीसी के जो मेंबर्स है, फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ये बस 3 साल के लिए
उस पोस्ट पे रह सकता है, no more than 3 years. Just for 3 years they are appointed, and during these 3 years their work is to look at various cases that are of the PoSH Act, and various cases of sexual harassment जो उनके particular जगह पे हुआ है, and provide redress to the aggrieved women. They also look after the investigation and inquiry of this particular under this particular case. तो पहला आता है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी. तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में जो है मिनिमम देयर आर ऑफ 4 मेंबर्स. ठीक है, तो ये सेक्शन 4 में आता है ऑफ द पॉश एक्ट. तो पहले तो उसमें एक चेयरपर्सन होगा, मिनिमम देयर विल बी 2 मेंबर्स, एंड देयर विल बी 1 एक्सटर्नल मेंबर. ठीक है, तो जो चेयरपर्सन होता है, शी इज अ वर्किंग वुमन हु इज एम्प्लॉयड एट अ सीनियर लेवल. If not available, then nominated from other office, unit, department or workplace of the same employee. ठीक है, तो जो हेड होता है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का, शी इज अ वुमेन जो कि सीनियर लेवल पे उसका शी इज होल्डिंग अ पोस्ट. एंड अगर वो उस पर्टिकुलर ऑफिस में कोई सीनियर लेवल पे कोई वुमेन नहीं है, तो किसी दूसरे ऑफिस, यूनिट, डिपार्टमेंट या फिर वर्क प्लेस से ऐसे ही मतलब ऑफ द सेम एम्प्लॉयर विल एम्प्लॉय सीनियर वुमेन. Then 2 minimum members. Now these 2 members will be from amongst employees committed to the cause of women, having legal knowledge or experience in social work. ठीक है, so the 2 other members, they'll be the employees who either are having legal knowledge or have an experience in social work, या फिर जो है they're committed to the cause of women. ठीक है, और जो एक्सटर्नल मेंबर होगा, he must be from amongst NGO या फिर association committed to the cause of women, or someone who is familiar with the issue of sexual harassment. फिर आता है लोकल कंप्लेंट कमेटी. तो जो लोकल कंप्लेंट कमेटी है, in that there is a chairperson, then there's a members, then there are 2 members and 1 ex officio member. तो जो चेयरपर्सन होता है, it is an eminent woman in the field of social work and someone who's committed to the cause of women. तो दोनों में जो चेयरपर्सन है, that is ICC और LCC में, दोनों में she is someone who holds a good position, and जो चेयरपर्सन अपन LCC में देखते हैं, she is also someone who's committed to the cause of women, or she is from the field of social work. Then जो मेंबर होते हैं, are nominated from amongst the women working in the block, तालुका और तहसील और वार्ड और म्यूनसिपैलिटी. तो जो एक मेंबर होगा, he will be nominated from either the तालुका और तहसील और वार्ड और म्यूनसिपैलिटी, as the case may be. ठीक है, जहाँ पे भी ये LCC बन रहा है. Then 2 members are nominated from amongst NGO, association of persons, or they are someone who are committed to the cause of women or familiar with the issue relating to sexual harassment, provided that अपन जो 2 members ले रहे हैं, उसमें से at least 1 member should have the knowledge of law or or they must have the background of law, और जो दूसरा member होगा, that must be a woman. ठीक है, तो जो 2 members हैं apart from the member जो हमने ऊपर बात की in point 2, उसमें से एक औरत होगी, and one must be someone who has legal knowledge or has a background of law, and an ex officio member. So जो ex officio member होगा, he will be concerned with dealing with social welfare of women and child development in the district. तो जब आईसीसी है, जब सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आईसीसी एस्टैब्लिश कर रहे, तो एलसीसी की जरूरत क्या पड़ती है? ठीक है, LCC will receive complaints from women working in organization having less than 10 workers. ठीक है, तो जो ICC established होता है, that is established in a place where there are more than 10 employees working at a time. Now, in case you are a woman working at a particular workplace जहाँ पे 10 से कम employees है, तो क्या होगा? Where will you go if you are aggrieved? You will go to an LCC. ठीक है, then if a woman wants to file a complaint against the employee, that is her boss itself, then she can also visit LCC. या फिर जो domestic workers है, now since this act also covers domestic workers, तो ऐसा तो है नहीं कि हर घर में एक ICC होगा. That's not possible, right? And that's also not the case in this particular act. So any domestic worker या फिर anyone who wants to complain against her bosses, या फिर any woman who is working in a place जहाँ पे 10 से कम employees हो, all those complaints will be dealt with ICC.
तो जो आईसीसी है उसमें दोनों में एक आईसीसी और एलसीसी दोनों में एक एक्सटर्नल मेंबर रहता है। तो एक्सटर्नल मेंबर का क्राइटेरिया क्या होता है? अ पर्सन familiar with the issues relating to women। इसका मतलब होता है such person who have expertise in issue related to sexual harassment। एंड इसका कुछ एग्जाम्पल हो सकता है who may be included। Now, if someone has at least 5 years of experience as a social worker, or someone is working towards women's empowerment, and in particular addressing the issue of sexual harassment at workplace, then he can be employed in the particular example. Apart from that, if someone is familiar with labor, service laws, civil laws, or criminal laws, even they can be a member of the ICC or LCC. Now, ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर। जो पॉश एक्ट है ये ड्यूटीज भी बताता है एक एम्प्लॉयर की, कि एक एम्प्लॉयर जो है उसे क्या क्या करना चाहिए। तो फर्स्टली इट सेज टू पब्लिश अ पॉश पॉलिसी। ना एनी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 10 से ज्यादा मेंबर होंगे वहां पे एक पॉश पॉलिसी दैट इज सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस की पॉलिसी जरूर होगी। Now the policy may be customized keeping in mind the nature and size of the organization, and it must be drafted by an experienced lawyer in a language and medium that all the members of the organization will understand. Then obviously employer की ये भी duty होती है to establish an IC, that is an internal complaints committee. So कोई भी organization again अगर उसमें 10 से ज्यादा लोग हैं तो employer की duty होगी वहाँ पे एक IC establish करने की। Further, जो भी internal complaint committee होगी, it must be established at every branch that has more than 10 members, and it should have a minimum of 4 members. जैसा अपन ने देखा था when we saw under section 4 the constitution. Then ऑर्गेनाइजिंग वर्कशॉप्स एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स। कई बार आपने देखा होगा कि जो ऑफिस होते हैं वो एडवोकेट्स को बुलाते हैं या फिर कोई पॉश ट्रेनर को बुलाते हैं टू ऑर्गेनाइज वर्कशॉप्स एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स। सो टू सेंसिटाइज देयर एम्प्लॉयज एंड टू प्रिवेंट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, एम्प्लॉयर की ये ड्यूटी होगी कि वो वर्कशॉप और अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करवाएं। Then display the consequences of sexual harassment. Now employee की ये duty होगी to clearly display the consequences of sexual harassment at a place that is visible to all. Further, the fifth duty, that is treating sexual harassment as a misconduct. ये जो एक्ट है ये स्पेसिफिकली बोलता है कि any instance of sexual harassment must be treated as a misconduct. All service rules, employment policies, procedures, and standing orders must clearly declare that sexual harassment will be treated as a misconduct in the particular office. Sixth is skill enhancing seminar for IC members, that is the complaint committee members. ये जो एक्ट है जिसकी अपन बात कर रहे हैं दैट इज द पॉश एक्ट, ये भी बोलता है कि एम्प्लॉयर जो है it should to conduct capacity building and skill enhancing seminars for its IC members. The employer या फिर जो भी organization अपन बात कर रहे हैं जिसकी, it must conduct orientation programs for members of the ICC, that is the internal complaint committee. Prepare an annual report. Now जब एक एम्प्लॉयर की अपन ड्यूटी बात करते हैं तो उनको एक एनुअल रिपोर्ट बनानी पड़ती है। So companies, organization, institution, and trust are all required to make an annual report concerning sexual harassment complaints जो उन्होंने उस साल में डील करी है, ठीक है। Then for complaints registered in India, the annual report must be filed with the ROC, that is the Registrar of Companies, and societies and trusts need to file this report with Charity Commissioner or Registrar of Societies, जैसे भी केस होगा when it is society or trust. और जो लास्ट उनकी ड्यूटी है that is assisting employees in reporting incidents of sexual harassment. Now one of the major issues is that कि even when women is sexually harassed वो आगे बोलती नहीं है because she thinks she'll face negative consequences. So employer की ये ड्यूटी है to make a woman feel safe and to ensure कि she'll not face any negative impact, ना ही उसकी job impact होगी ना ही उसकी daily life impact होगी if she reports a particular incident. So it is really important that an employer assists their female staff in reporting such incidents of sexual harassment, and if the female employee chooses to take any legal action including any criminal measure, then
जो भी कंपनी होगी या फिर जो भी एम्प्लॉयर होगी, it will be their duty to help this particular female employee. Now, this is everything that I had to speak about PoSH Act, an overview of this particular act. Now coming to another thing, that is the complaint mechanism, जो कि हमारा last part होगा of this particular act. So, what is the complaint mechanism that is used? So, an agent who intends to file a complaint is required to submit 6 copies of a written complaint, along with supporting documents and names and addresses of the witnesses to the IC or LC, that is the internal complaint committee or the local complaint committee, जैसा भी case होगा, and within 3 months from the date of the incident, and in case of a series of incidents, within a period of 3 months from the last date of the last incident. So, पहले तो ये करना होगा कि जो भी अग्रीड फॉर्म है उसको कॉपीज देनी होगी आईसी या फिर एलसीसी को अपने कंप्लेंट से रिगार्डिंग, और रिटर्न कंप्लेंट शी हैव टू फाइल, एंड शील आल्सो हैव टू she'll also have to give the names and documents supporting her, and कोई भी witness अगर हो तो उनका भी नाम और एड्रेस उसको देना होगा आईसी या फिर एलसीसी को. अब जो टाइम लिमिटेशन है वो 3 महीने की. तो if it is an incident that has happened once, then suppose ये इंसिडेंट आज हुआ है, that is आज से 21st of December, तो मेरे पास आज से 3 महीने है to file that complaint. If it is an incident जो regularly हो रहा है मेरे साथ, ठीक है, that is if it is a series of incidents, then जो भी लास्ट इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ, फॉर एग्जाम्पल लास्ट इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है 18th of December को, तो from that day I have 3 months time to lodge this particular complaint. In instance where sufficient cause is demonstrated by the complaint for the delay in filing the complaint, in that particular case, जैसे अपन जो कोर्ट्स देखते हैं, कोर्ट्स भी डिले कॉन्डोन कर देते हैं, राइट, इफ देयर इज अ सफिशिएंट कॉज. सिमिलरली अगर इस केस में भी अनएग्रीड वुमन शोज कि उसके पास सफिशिएंट कॉज था जिसके कारण उसने ये 3 महीने के पीरियड में उसने कंप्लेंट नहीं फाइल करी, then the ICN or LC may extend timeline for filing the particular complaint. Law also makes provisions for friends, relatives, co-workers, psychologists, and psychiatrists, etc., to file complaint in situation where the aggrieved woman is unable to make the complaint on account of physical incapacity, mental incapacity, or death. तो basically IC या LC के पास जाके आपके फीमेल वर्कर के दोस्त या फिर साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट विजिटिंग एनी, बिकॉज वी नो सेक्सुअल हरासमेंट इज समथिंग जिससे काफी ज्यादा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है एक पर्सन के दिमाग पे. सो इफ शी इज विजिटिंग अ साइकियाट्रिस्ट और अ साइकोलॉजिस्ट, देन दे कैन आल्सो फाइल अ कंप्लेंट विद आईसी और एलसी, और इवन द कोवर्कर्स और रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, they can file this particular complaint. But situation ऐसी होनी चाहिए कि she is either physically or mentally incapacitated or due to her death. Now this was something that I had to discuss. Apart from that, since I believe you're all interested in the topic of PoSH, that is prevention of sexual harassment at workplace. So this is an opportunity for you all. We have launched a certificate course on PoSH जो 4 महीने तक रहेगा, 4 हफ्तों का होगा, I'm sorry. So this course will begin on 23rd Jan, and जो course complete होगा वो February 24 में होगा, that is 2024. And the last date of registration is 18th January. तो अगर किसी को register करना हो, you can definitely join. And why join? There are many reasons. चलिए ये session तो आपका मैंने लिया है, but during these 4 weeks, there will be advocates, there will be teachers, there will be PoSH trainers who will give you practical insights on PoSH, and not just from a female perspective, but you'll also get to learn on what this act is lacking. चलो अपन ने देख लिया कि एक अगर फीमेल एम्प्लॉय एग्री होती है तो उसके पास क्या रेमेडी है, बट व्हाट इफ समवन लॉसेस फेक कंप्लेंट, व्हाट इज हिज रेमेडी, उसको क्या करना, उसके पास क्या ऑप्शंस है, because someone only who is in that practical aspect can give you those insights. So we'll have those expert talks. Apart from that, आप compare कर लो बाकी सारे जो courses are not as cost efficient as ours, and you'll also get video lectures for around 15 to 20 hours, and you'll get written notes तो आपके साथ हमेशा रहेंगे. There will be a discussion on around 16 cases, both national and international, जिसमें PoSH से related
की बातें कही गई होंगी, that is prevention of sexual harassment से related ही बातें कही होंगी by the honorable courts. And you'll also get regular weekly sessions to clear doubts, and also आपका CV में जो growth होगा वो होगा ही. That was it from my side, and over to you, Paras.